कि डोर एंड विंडो ना पहले केवल एक कैविटी कंसीडर की जाती थी घर में गैप को फिल करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगा यार ये ऐसा प्रोडक्ट है ना जिससे हम लोगों की लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारी टैग लाइन भी है ना कि इनक्राफ्ट की विंडोज टू हैप्पीनेस, की खुशियां इन्हीं खिड़कियों से आती हैं। So today, dated on 10th of October 2025. Well, a visionary leader whose innovation has earned recognition across the nation, a trusted name and a true trendsetter in the uPVC doors and windows industry, known for delivering world-class quality and customer satisfaction. A man who has taken Encraft to the newer height. He is right in front of us. He is none other than Avanish Singh Visen, Director and CEO of Encraft India Pvt Limited. Greetings and welcome to Erafame Media Group's channel, sir. Thank you very much, Raji ji. Thank you very much for a very nice introduction. Sir, to begin with, would you brief your journey and also, what inspired you to be part of this doors and windows industry? Good question. If I talk about my journey, then Raji ji, I'm a midtown boy. I belongs to a farmer family. I belongs to a very small village. I belongs to the UP Gorakhpur district, and then directly I'm coming to my professional career. During my initial days of the career, basically I spent my time in the procurement, supply chain, logistic, exam, business operation. I spent close to around 2 decades of my career there in the different industries and different leadership positions. And during my career, during this 2 decades of the experience, I learned that to make any business successful, there are the 4 important things. One is the quality, trust, consistency, and making heart-to-heart relationship with the partners. Now, coming to your question, how I moved to the doors and windows industry. See, this I can say you that I'm accidental CEO and CEO basically. If I recall my days in the 2018, when it was July month, in fact, when my promoter and the chairman, Mr. Rajiv Jain, he has approached me and he told me, कि यार तुम Encraft की marketing lead करो क्योंकि Encraft is not going in a good shape. जो मेरा vision है उसके regarding growth नहीं हो पा रही है. तो फिर आप जान ही रहे हो सर, क्योंकि ये दिल मांगे मोर. तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, if really you want to empower me and you have a trust on me, then why can't you give the whole Encraft to me as a business head? उस टाइम उनको लगा ठीक है यार, पिछला इसका कुछ बैकग्राउंड रिकॉर्ड तो है नहीं, प्रूवन रिकॉर्ड की कहीं पे एज ए सीईओ काम किया हुआ हो, ठीक है, ये कस्टमर सपोर्ट, सप्लाई चेन, एग्जाम, ऑल दिस, एंड एनीवे ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर विद मास्टर इन सप्लाई चेन. Then he went back and he discussed with the board, and finally they had agreed on this, and that people that elevated me in the August 18 as a CEO of the Encraft. तो उस समय क्या है कि the company was having a very strong foundation, but anyway कहते हैं ना कि अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं आई होती तो अवनीश सिंह विसेन का जन्म भी नहीं हुआ होता as a CEO. Correct. So we got a good challenge there, and ultimately I'm very thankful to all my customers because of their customer support and the patronage, and doubtly it's my team who makes a difference. They had put it their heart and soul, and today we are witnessing this growth journey. Or once I started spending a lot of time with the fenestration industry with doors and windows, then I realized कि डोर एंड विंडो ना पहले केवल एक कैविटी कंसीडर की जाती थी घर में गैप को फिल करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगा यार ये ऐसा प्रोडक्ट है ना जिससे हम लोगों की लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं. क्योंकि जैसे हमारी टैग लाइन भी है ना कि इनक्राफ्ट की विंडोज टू हैप्पीनेस,
कि खुशियां इन्हीं खिड़कियों से आती हैं। तो जब मैं खिड़कियों और दरवाजों की तरफ मूव हुआ तो खिड़की दरवाजे की चर्चा तो हम लोग बचपन से ही करते हैं कि जब सुबह किया तो सुबह की धूप आने से लेकर के कुछ बैठ के सोचने से लेकर के चाय पीने से लेकर के घर में किसी नए का अगर आगमन भी हो रहा है, अगर कोई बहू आती है वो भी दरवाजे से आती है, घर में एक बच्चा एक ट्रॉफी जीत के आता है वो भी दरवाजे से ही आता है। तो दैट्स हाउ आई रियलाइज कि एक ऐसा प्रोडक्ट है डोर्स एंड विंडो जहां पे लोगों की जरूरतों से और लोगों की डेली लाइफ से जुड़ करके उनके लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा सर, and for those who are hearing about Encraft for the first time, what message would you like to pass on? And what is what is your core strength, if you can describe to our viewers? I don't think anybody is there who will be hearing the Encraft as the first time. Okay. इतनी तो मेहनत की गई सर कि लोगों को Encraft के बारे में पता होगा। But anyway, since you said for the people, Encraft basically I can describe in a single word. Encraft, we are one-stop solution for the complete fenestration product, starting from the premium uPVC doors and windows to the premium aluminium doors and windows, facade and railing. And basically what makes us different from others, because we as Encraft, we don't consider ourselves as a manufacturer. We always consider ourselves as a solution provider. And basically if you talk about the Encraft, we are heavily invested in the technology, our manufacturing capabilities, to expanding our network, and also to focus more on the installation as well as the service part, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी बनाने से केवल नहीं होता है, जो एंड यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ओवरऑल आपके इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने बना दिया, बट बनाने के बाद वो राइटली अगर फैब्रिकेट होकर इंस्टॉल नहीं हुआ, देन अगेन नॉट योर प्रोडक्ट होल फैटर्निटी विल बी गेटिंग ब्लेम्ड. That's why in Encraft we are focusing more and giving more emphasis on our customer-centric approach with the innovation driven by the experience, right? And here if you see again in the Encraft, the things which makes us the different, we have our strong pan-India fabrication network where we are investing a lot, where the right product quality can be delivered to your doorstep with a genuine cost. And also we keep on investing in the innovation experience center and creating the more futuristic product for our customers. Okay, and as we all are aware about it, the doors and windows industry has evolved significantly over the years, right? And what major changes have you seen and we all have witnessed in customer preferences? See, very good question. Basically, the transformation has been remarkable. अगर मैं बात करूं, if I talk about the decades ago, then people used to talk only about the price and appearance. But आज की जो conversation है ना, वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब कहीं ना कहीं लोगों को ना, people are looking for the performance. They are looking for the energy efficiency, sound insulation, weather resistance and the long term performance. तो एक अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि that one shift has been here, and also the end user, the customers, they have the more knowledge, more awareness than ever before they used to be. अगर एक डिकेड्स पहले की बात करूं तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट आज इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि पीपल्स आर टॉकिंग मोर अबाउट द परफॉर्मेंस. एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट द especially the new talk of the town, which is aluminium, then people had started talking about the larger opening, higher section, and the very minimal design, where the peoples are keeping the more focus on that. And also today now even the peoples are focusing on the sustainability more. All the builders, the homeowners, they are looking for a product which can be energy efficient, and the material of the product, it needs to be the closer to the mother earth. And also today one thing, how can we forget the smart window concept, the AI enabled window. And what I believe in the coming time and the days, this type of the talks, it is going to be the more aggressive and the more popular. How does Encraft ensure quality, durability and performance across its product range? See, what I believe always, quality का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी एट द एंड स्टेज पे सारी जो प्रोसेस के एंड में चेक की जाए, जबकि क्वालिटी की डिजाइन ना शुरुआत से ही करनी पड़ती है. And if you talk about the quality for Encraft, in Encraft we focus on every step of the value chain, starting from the raw material selection to our manufacturing process, then to the fabrication, and of course to the installation.
if you talk about the Encraft, we heavily invest, sorry, I can say in another word, we never compromise in two things, the man, material, and the machine, right? Okay. We always choose the one of the best quality of the raw material with one of the best available machine in the world which money can buy, and also, with the one of the best processes. And we use premium quality of the profile with the premium hardware to deliver the performance driven system so that it can perform well with the end user in the market. And also, क्वालिटी का मतलब यही नहीं है कि केवल आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बना दी. For our product, installation as well as the fabrication is equally important. We want to deliver, and we are aiming, even we are delivering the product which perform consistently irrespective of any weather condition, any climate condition, और जो कोई भी परिस्थितियों को किसी भी यूजर्स को झेलने के लिए तैयार हो. ओके. अच्छा सर, आई जस्ट वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन. मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा. ये अभी जो जियो पॉलिटिकल अभी चल रहा है, उसमें बहुत सारे जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो आर गेटिंग इफेक्टेड बैडली. बहुत सारे को गैस नहीं आ रहा है, बहुत सारे को रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है. आप इसको कैसा देखते हैं, और क्या इनक्राफ्ट भी इफेक्ट हुआ है इससे? सर देखो, अगर मैं आपका एक वर्ड में बात करूं कि इनक्राफ्ट भी इफेक्ट हुआ है कि नहीं, वह यस ऑफ कोर्स हुआ है. क्योंकि जब भी लोग इस वेस्ट एशिया एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं तो सबकी घूम फिर के कहानी केवल एक ना क्रूड ऑयल तेल पे चली जाती है. बट हमारी इंडस्ट्री की कहानी केवल तेल से शुरुआत नहीं होती. देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो. अब अगर देखोगे लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ गई. द वे हाउ दिस इंडियन रुपीज हैज गॉट डेप्रिसिएटेड. अगर मैं यूपीवीसी की बात करूं तो इसमें मेरी पीवीसी रेजिन है जो कि मेजर कंपोनेंट है, जहां पे आप देखोगे डायरेक्टली इट्स रिलेटेड टू द क्रूड. When the crude prices will go up, this price will also go up. और इंडिया में if you see there is a big deficit supply versus demand. जितनी PVC resin की डिमांड है उतनी इसकी प्रोडक्शन नहीं है. Then we are largely depending on the imports also. Apart from this, our other additives that is also being imported. मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, हमारे डॉलर इंडियन रुपीज डेप्रिसिएट हुई. If I talk about my another product, aluminium is a highly energy intensive product. तो अगर इस क्राइसिस की वजह से जहां पे लोगों की जो प्राइसेस बढ़ी, देन सर्टेनली इनक्राफ्ट की भी प्राइस बढ़ गई, राइट. ऑल आवर इनपुट कॉस्ट हैज गॉट इंक्रीज्ड. और इसमें एक और, मैं आपके थ्रू योर चैनल आई वांट टू गिव अ मैसेज विच देयर इज अ बिग मिथ. लोगों को ये लगता है कि जितनी प्राइस बढ़ी उतनी प्राइस पास कर दी जाती है. ऐसा नहीं होता है साहब. वैल्यू चेन में हर कोई इफेक्टेड होता है, राइट. जब एक क्राइसिस आती है उसमें कोई सोचे कि मैंने तो अपना सारा पासान कर दिया, नहीं. सम ऑफ द पोर्शन बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय अस, हम अपना कुछ अपने फैब्रिकेशन पार्टनर को हम देते हैं, पास करते हैं. वो अपना कुछ एक पोर्शन जो है वो अपने जाकर के एंड यूजर को पास करते हैं. एंड यूजर के पास ना बहुत थोड़ा सा इफेक्ट आता है. और इसके थ्रू आई वांट टू आल्सो गिव वन मैसेज टू द अदर पीपल कि लोग ना शॉर्टकट के रास्ते बड़े अपनाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि it is very easy for us also to maintain the quality, just only maintain the profit, right? Just compromise on the quality. But my message to all the viewers, kisi never ever compromise with your dignity, with your integrity and the quality. क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो लॉसेस है ना वो प्रॉफिट में रिकवर हो जाएंगे. बट एक बार अगर आपकी ब्रांड इमेज चली गई ना, वैल्यू चली गई, दैट यू कांट रिकवर. एंड वी एज अ कंट्री वी मस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ द क्राइसिस विच इज अगेन लगभग एग्जैक्ट ईयर तो मुझे नहीं पता कि और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक विजन है, मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडियंस एंड मेक फॉर द वर्ल्ड. कि जितना हमारी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर रहेगी, लेट दिस टाइप ऑफ द टर्बुलेंस विल कम, बिकॉज वी एज अ कंट्री, आवर इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन बेस्ड. हमें बाहर बेचने से उतनी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे देश में इतनी कंजम्पशन है. तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है. एंड हियर बीइंग एज एन क्राफ्ट वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग विच इज अ प्योर 100% मेक इन इंडिया कंपनी, एंड वी आर मेकिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड, एंड वी आर competing with almost all the global brand who are here available in India. And today by sitting in India, almost we are exporting to all the SAARC countries, with the Nepal, Bhutan, then again to the UAE, and also to the other countries also we are trying to make our footprint. Okay. And sir, how do you maintain a balance between professional and personal life? क्या बात है सर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आप पूछे हैं. और आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मेरे घर वालों को भी जरूर एक बार देखना, स्पेशली मेरी बीवी को. See what I believe, this maintaining the balance is not about dividing the time equally. Okay. Rather than it's fully being present wherever you are.
आधे मन से कहीं रहने पे काम नहीं चलता है सर। अगर आप काम में हो तो फुल वहां रहो, फैमिली के साथ हो तो फुल वहां रहो, राइट? बिकॉज व्हाट आई बिलीव, लीडरशिप ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, व्हेन द बिजनेस नीड्स योर मोर अटेंशन। उस समय पे ऐसा होता है कि आप वहां टाइम नहीं दे पाएंगे। बट मेरा ये भी मानना है, लगातार अगर काम करते रहोगे ना सर, तो भी आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दे नहीं पाओगे। आराम चाहिए ना सर? चाहिए ना, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। And for me, if you talk about for me, my family, my health and personal beings, it's the extremely important Okay. because they provide perspective and always they help me to be grounded and to be always, इसको बोलते हैं ना कि धरती पे पैर हमेशा जुड़े रहें। जुड़े रहें। फैमिली जो है ना, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। And always, I also believe in empowering the people and building the system, because once you have the right people and the right system, then there is no need for you to do the micromanagement. Your team, your people and your process will deliver you. और दूसरा सर, एक बात बड़ी क्लियर है सर कि success is meaningful only when you can enjoy it with the people who are most important for you. जब वही लोग नहीं हैं तो फिर सक्सेस लेके करोगे क्या आप? भी नहीं। वेरी ट्रू सर। Thank very you. full of depth, insightful, valuable. Acha sir, Encraft offers a wide ranges of products, right? And which products are currently witnessing the highest demand in the market? What do you think? If you talk about me, for both my product, uPVC and aluminium, they are trending in the market, and there is a pent up demand for both the product. If you talk especially the uPVC, in the residential sector, uPVC sliding casement and the combination doors and windows, they are getting more trend because of the energy efficiency, the strong weather performance, and also the low maintenance. But if I talk about the basically the high end villas and the most ultra luxury premium segment, there because of the larger opening and the very taller section and the slimmer section, because of that the aluminium is taking a more traction. And biggest strength as a leader? For me, stay cool and calm in pressure and taking the decision wisely. कि Yes, sir. विषम कठिन परिस्थितियों में भी फोकस रहना, वो मेरी मेन स्ट्रेंथ है। Okay. uPVC or aluminium? Again, the answer is same, both, depending on the application. Okay. Residential or commercial projects? Residential, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि here you can touch the life of the end user, और यहाँ आप लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकते हो। Okay. Innovation or experience? इनोवेशन ड्रिवन विद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दिशा देता है, इनोवेशन स्पीड देता है। Okay. One message if you would like to pass on to the young entrepreneur? My message to the young entrepreneur is very clear. Be focused, have patience, never ever compromise on the quality and integrity. अगर हिंदी में कहूँ तो सफलता रातों रात नहीं आती है, लेकिन अगर आपने वैल्यू और इथिक्स से सफलता सक्सेस बनाई है तो बड़े लॉन्ग टर्म तक वो टिकती है। देन प्लीज फोकस देयर। Thank you very much, sir, for your insightful, valuable inputs, very decisive feedback I have received over, I think, 15 to 20 minutes. Thank you very much for connecting with the Encraft Media Group, sir. Thank you very much, Raji ji. Thank you very much to you and the Era Frame for covering Encraft and me, and also touching almost all the very important topics which is relevant to the industry, which is very relevant to the current market affairs and to our country also. Thank you very much. Pleasure is all ours, sir.